Last lecture 4, the chapter that is Albert Einstein at school. So let us be in continuity. So I think you are crystal clear about each and every word, each and every point so far as this particular chapter is concerned. We're going to end this particular chapter enthusiastically. So let us start today's assignment. So if we look at the pinpoint of today's assignment, was called by head teacher. Head teacher, I have already explained you, headmistress or headmaster. Here we are able to look at the word headmaster. So summoned, I had explained you people, it means called. Basically this word is used in quotes, but here this particular text highlights this particular word, that is summoned. It means to call. So you have to listen it in a very systematic manner. So first point I have told you, called by his head teacher, and he head teacher of his school. And second point we have to study his interaction with head teacher. And third main point of today's lecture is expulsion from school. And fourth, we have to look at very fine point enthusiastically. That fellow was quite enthusiastic while he had left the school. And the last point for today's lecture will be moral of this particular chapter. Now let us start line by line. So if we look at, he was called by his head teacher or headmistress or headmaster. You have to look at, well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. So you have to look at this particular point. He was planning to visit his headmaster's office because he wanted to show his medical certificate and apply for leave. He became very happy while he was summoned to the head's room. जब उसको मैसेज मिला कि हेडमास्टर सर ने उनको बुलाया है, he became very happy. तो क्या फीलिंग उनके मन में आया? Just look at. Well, it saves me the trouble of having to wait an hour. He was able to think on that particular line. He was feeling comfortable to just think on that particular line that he had saved the time. यानी क्या? क्यों? If he would visit headmaster's room by his own, he would have to wait an hour or two outside. So I think you are able to understand this particular point. Okay, I have already told you people that this particular sentence highlights that he was very comfortable to think on of that particular point that his headmaster had summoned. तो उनको बुलाया गया है, वो बहुत खुश हुए. तो just listen the things again. तो यहाँ वो सोच रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन जी कि अच्छा हुआ अगर मैं खुद जाता तो मुझे 1 घंटा या 2 घंटे बाहर वेट करनी पड़ती, क्योंकि बहुत सारे विजिटर्स होते हैं हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के रूम में एंटर करने के लिए. तो ये सोच रहा है इस पॉइंट को कि it was very comfortable to think of that particular point. Let us start with the next. He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishments. Just look at this particular paragraph. He hardly bothered to wonder. He was not thinking on that particular line that why he had been called by the head teacher or the headmaster. But was able to think on that particular line that again headmaster wanted to punish him
for his bad work and just lethargic attitude. I think you are crystal clear. Well, he had finished with punishments and he was enthusiastic enough to think of that particular fact that now he was away from all such type of punishments because he was going to leave that particular school. He was going to quit that particular school. तो इसको बेटा दोबारा समझिए. उसको इस बात की टेंशन नहीं थी एल्बर्ट आइंस्टाइन को कि क्यों हेड टीचर ने बुलाया उनको या हेडमास्टर ने क्यों बुलाया, लेकिन उसने इस पॉइंट को बड़े ध्यान से हाईलाइट कर सकता था. रीजनिंग पार वाज सेइंग, जो उसकी रीजनिंग पार थी वो उसको हाईलाइट कर रही थी कि उसने फिर कोई गलत काम के लिए या लेथर्जिक एटीट्यूड के लिए यानी कि पनिशमेंट डिजर्व करता है. यानी ही वाज एबल टू थिंक ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन कि हेडमास्टर ने इसलिए बुलाया कि पनिश करना चाहता है उसके किसी नेगेटिव एटीट्यूड के कारण या उसके लेथार्जिक एटीट्यूड के कारण. तो फिर लास्ट में देखिए वेल ये और कोमा ये हाईलाइट करता है कि वाज वेरी एंथुसियास्टिक टू क्विट दैट पर्टिकुलर स्कूल. तो कहते हैं अब होगी सारी पनिशमेंट खत्म. आई थिंक स्टिल क्लियर दिस. Now look at the next. I'm not going to punish you, the head teacher said. To Albert's surprise, again inverted commas, your work is terrible and I'm not prepared to have you here any longer. Einstein, I want you to leave the school now. Just look at instruction of head teacher. Just look at the instruction of headmaster. Here, headmaster wanted to highlight that particular fact that he was not going to just give him any punishment. So, Albert became very surprised to listen the dialogue or sentence spoken by headmaster. And again, headmaster added that Einstein's work is extremely negative, extremely pessimistic. Terrible hota hai pessimistic. I think negative. And I'm not prepared to have you here any longer. Just look at the hard or harsh words used by the headmaster. It's highlighting that particular point that he was not prepared to just keep him in the same school. कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुझे कि तू और इस स्कूल में रहे. Einstein, I want you to leave the school now. Instructed Einstein harshly that he wanted Einstein to leave the school immediately. I think quite harsh words used by the headmaster. Again, I'm highlighting the same. तो यहाँ पे हेडमास्टर्स जो है वो कह रहे हैं आइंस्टाइन को कि बेटा मैं आज कोई पनिशमेंट नहीं देने जा रहा तुझे. और इस बात को सुन के एल्बर्ट बहुत हैरान हुआ और आगे क्या हाईलाइट किया हेडमास्टर सर ने. उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा वर्क बहुत नेगेटिव है और मैं तुम्हें और इस स्कूल में कंटिन्यूटी में रखना नहीं चाहता, एक्सपेल करना चाहता हूँ. मैं ये चाहता हूँ कि तुम स्कूल छोड़ के इमीडिएटली यहाँ से चले जाओ. तो आई थिंक रीजन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. Reason was just disturbing each and everything. That particular school. Even he was disturbing his teachers also. So I think you are crystal clear. There's no doubt in this particular paragraph. Now look at the next. Leave school now. Repeated Albert dazed. Just look at the attitude or action and reaction of Albert Einstein. जैसे ही इंस्ट्रक्शन दी हेडमास्टर ने, just look at the way of reply
given by Albert Einstein. क्या उन्होंने रिप्लाई किया, you will have to look at very sincere way. तो became very pessimistic. Dazed क्या होता है, जब इंसान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इतना ज्यादा नेगेटिव फील करता है, यानी जिसको वो he or she never able to recognize the things in a normal way. यानी कि जब एक्सट्रीम लेवल पे इंसान जो है शॉकिंग कंडीशन में, नेगेटिव कंडीशन में, एक्सपल्शन की बात सुन के जैसे अनाउंस किया है टीचर ने कि वो वहां पे उसको रखना नहीं चाहते उस स्कूल में, he became I think dazed. हैरानी से रिपीट कर रहे हैं हेडमास्टर के सेंटेंस वो, लीव स्कूल नाउ। कहते क्या क्या कह रहे हो सर? यानी रिपीटेड एल्बर्ट का मतलब जो वर्ड्स हेडमास्टर सर ने बोले थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी उनको रिपीट किया। कहते स्कूल छोड़ के चला जाओ अभी। That is what I said. Just look at the reply of the headmaster. The headmaster replied that he had instructed the same. कि यही कहा है बेटे मैंने कि जा स्कूल छोड़ के चला जा। Think you are able to understand this particular point. Look at the dialogue of Albert Einstein. Inverted commas. You mean, said Albert, that I am to be expelled? Just look at the words of Albert Einstein. I was deeply shocked to listen the words of headmaster, to listen the instruction of headmaster. So that is why he wanted to highlight the things. You mean, यानी कहने का मतलब कि सर आप क्या हाईलाइट करना चाह रहे हो? What you want to highlight? तो what he wanted to highlight, अगर indirect speech में हम बोलते हैं इसको, that he was to be expelled, यानी कि उसको मुझे expel किया जा रहा है। Expulsion, I think you are able to look at expel होता है जब निकाल दिया जाता है स्कूल से। I think there is no doubt so far as these words are concerned. Each and every word is crystal clear. Now look at the last page, that is 31. Now just look at, you can take it that way if you want Einstein, or if you wish Einstein. The teacher was not mincing words. The simplest thing will be for you to go off your own accord, and then the question won't arise. Just look at this paragraph. तो यहाँ पे जो हेड मास्टर और हेड टीचर इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कहते बेटा अगर तो इसको एक्सपल्शन समझता है तो समझ ले, कि जिस तरीके से सोचता है सोच। मैंने पहले तो तुझे यही कहा कि तू खुद ही छोड़ दे स्कूल। The first instruction given by headmaster was that he must quit the school. उसका एटीट्यूड ऐसा था कि जब खुद बच्चा क्विट करता है, things are different. अगर स्कूल एक्सपेल करता है तो क्या होता है कि अगले भी नेक्स्ट फ्यूचर में उसको अच्छे स्कूल में या किसी भी स्कूल में एडमिशन कई बार नहीं मिलता। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो कहते बेटे तू इसको एक्सपेल्शन समझता है तो तेरी मर्जी, उसको एक्सपेल्शन समझ। Head teacher was not mincing words. At this particular moment, the head teacher was highlighting his harsh behavior or attitude because he was fed up to look at the activities or I think behavior of Albert Einstein. तो उसका जो बिहेवियर था स्कूल में एल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत नेगेटिव था। तो इसलिए हेड टीचर बहुत गुस्से में थे, एरोगेंट एटीट्यूड दिखा रहे थे। मिंसिंग वर्ड को बेटा इसका मीनिंग लिख लीजिए। राइट ऑन द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। मिंसिंग होता है बेसिकली जब हम मिक्स कर रहे होते हैं। कई बार होता है ना कि हम हार्श एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं, साथ में काइंडनेस के कुछ वर्ड जो है मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ ये पॉइंट, ये वर्ड हाईलाइट कर रहा है, द हेड टीचर वाज नॉट मिक्सिंग वर्ड्स, यानी ही वाज नॉट शोइंग
any kindness at that particular moment. He was using harsh words. So I think you are able to understand this particular point. Yani ki, in other words, we are able to look at this particular point, direct and forceful saying. जब भी हम कई बार हम हार्श और एरोगेंट एटीट्यूड जब दिखाते हैं, जब वो बड़ा सख्ती से बोलते हैं, कोई बीच में जेनरसिटी का वर्ड हाईलाइट नहीं करते, तो हेड टीचर जो था कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहा था. It was very harsh while he was speaking. His speech was direct and forceful. His dialogue was direct and forceful होता है, strong. Next step, the simplest thing will be for you to go of your own accord. So he wanted to highlight that particular point, that the simplest होता है जनरल, very simple. तो यहाँ पे हेड टीचर कह रहे हैं, the very simple point is will be if Einstein was ready to leave the school on his own accord. अगर इसका मीनिंग देखा जाए बेटा, इसका मतलब होता है own accord का मतलब होता है voluntarily, अपने आप. यानी कि अपने आप कहते हैं कि अगर इस डिसीजन ले ले कि मुझे स्कूल वाले नहीं रखना चाहते, मैं खुद ही छोड़ दूं. एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज. तो यहाँ पे हेड मास्टर कह रहे हैं, फिर तो ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता एक्सपल्शन का. ये तो हमें एक हार्श स्टेप इसलिए लेना पड़ रहा है बेटा कि तेरा जो एटीट्यूड है दैट इज नॉट अप टू. तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ओन अकॉर्ड, यानी कि अपनी विल पावर से वॉलंटरीली, अपने आप. आई थिंक मिक्सिंग वर्ड, यू आर क्रिस्टल क्लियर, इट मींस मिक्सिंग. देयर इज नो डाउट इन दैट, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर. कहते बेटा ये फिर एक्सपेल करने का तो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा अगर तो अपनी मर्जी से स्कूल क्विट कर दे. तो वोट का ऑलरेडी मैंने बेटा बताया था ना कि विल नॉट होता है, वुड नॉट नहीं होता है. शुड बी वेरी केयरफुल. इट इज ट्रैक्टेड फॉर्म और शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ विल नॉट. इसको लिखते जाओ, जस्ट राइट एवरीथिंग, बिकॉज विदाउट strong word power you can never ever be able to understand any point. Look at the next. But, said Albert, what crime have I committed? Albert was not afraid of headmaster. He was very enthusiastic. तो कहते हैं लेकिन सर ये बताइए कि मैंने क्या गलत काम किया है, कौन सा ऐसा नेगेटिविटी मैंने किया है सर. व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड. क्राइम इज अ वेरी हार्श वर्ड. तो कहते हैं कि सर मैंने किया क्या है, क्यों मुझे एक्सपेल के लिए आप इंस्ट्रक्शन दे. Look at the reply of headmaster. Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. You refuse to learn. You are in constant rebellion and no serious work can be done while you are there. Just your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach. Here, headmaster wanted to highlight the point, was highlighting that particular point, that presence of Einstein in the classroom just makes impossible for the teacher to just teach smoothly. And the same way, the other students were unable to learn in a systematic way. Pupils beta hota hai students, Pupils means students. बेटा जो तेरी प्रेजेंस है क्लास में इंटरप्शन क्रिएट करती है, ना तो वो टीचर को पढ़ाने देती है, और जो इंटरप्शन आप क्रिएट करते हो आइंस्टाइन जी, तो ना ही वो स्टूडेंट्स को पढ़ने देती है. आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेरी सिस्टमैटिक वे, देयर इज नो डाउट. You refuse to learn. You are in constant rebellion.
No serious work can be done while you are there. Just look at it. You refuse to learn का मतलब तो पढ़ने से मना कर देते हो कि you never want to learn the facts. और टीचर को डायरेक्टली आप रिफ्यूज करते हो कि मैं नहीं लर्न करूंगा. You are in constant rebellion. Just look at the meaning of rebellion first. It means to oppose something. Note down this particular meaning. REBELLION. It means to oppose something. किसी भी चीज का विरोध करना. ये SST में आपने ये वर्ड पहले भी पढ़ा होगा. And no serious work can be done while you are there. बेटा जब तुम क्लास में होते हो तो कभी कोई पढ़ाई तो हो ही नहीं. और कोई सीरियस जो एजुकेशन है वो तो अपग्रेड हो ही नहीं सकती. ना टीचर पढ़ा पाएगा और ना ही बच्चे पढ़ पाएंगे, स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे. Here the headmaster is very right. Now just look at the next. Just look at the reply of Albert Einstein. Reply or I think thinking level of Albert Einstein. Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket. Just look at this particular sentence. और फीलिंग्स देख रहे हैं हम, फीलिंग्स रीड कर रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की इस सेंटेंस में. क्या फील कर रहा था वो, उसकी इमोशंस क्या हाईलाइट कर रही थी. First of all, before understanding this particular sentence, you must note down the meaning of burning a hole in his pocket. Just note down the meaning of it. So, bete, if we look at the meaning of this particular idiom, means to spend money unnecessarily, to waste money unnecessarily. Write down. It's very tough. Note it down. Burning a hole in one's pocket होता है while we waste money. So add it in the dictionary of your brain also. तो यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या फील कर रहे हैं कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है दैट वाज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी. उनका कोई फायदा ही नहीं हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट का. चाहे उन्होंने पैसे नहीं खर्चे थे उनके उसके लिए, लेकिन ट्रीट तो दी थी ना. I think you are able to understand this particular point in a very systematic way. Now just look at the dialogue of Albert Einstein. Inverted commas, I was going to leave anyway, he said. Yes, sir. मतलब वैसे ही छोड़ के जा रहा था. Was ever ready to quit that particular school. He had planned to quit that particular school. He was just speaking harshly. बहुत नेगेटिव वे से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया आइंस्टाइन ने कि सर मैं, आप क्या मुझे एक्सपेल करोगे, मैं तो खुद ही रेडी था स्कूल को क्विट करने के लिए. Look at the next. Then we are in agreement at least, Einstein, the head said. Just look at the reply of head. Head had responded. तो बेटा फिर तो दोनों की सहमति से हो रहा है. एग्रीमेंट होता है सेम थॉट, द टू पार्टीज. तो बेटा फिर जो तुम चाहते हो और जो मैं चाहता हूँ तो आई थिंक सेम सहमति हो गया. आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. Next is, for a moment, Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of his school. Then he stopped himself. Without another word, holding his head high, he stalked out. देखिए, at this particular stage, Albert Einstein became very irritated. To look at the dialogues of the head teacher. और इस क्षण एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो मन किया, टेम्पटेशन क्या होता है, जब हमारा डिजायर होता है, कीन डिजायर होता है, उसके दिल तो ये कर रहा था एल्बर्ट आइंस्टाइन का कि हेडमास्टर से कुछ नेगेटिव वे से बात करे. कि समझता क्या है वो अपने आप या अपने स्कूल को. यानी ये नेगेटिव बोलना चाहता है इंसान को, तो होता है ना कि हार्श लैंग्वेज कई बार हम बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं. यानी कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. एक क्षण, यानी कि उसका मन किया
ये जो कीन डिजायर ये था कि हर टीचर को थोड़ा सा रास्ता दिखाऊं, बोलोगे तो समझता क्या है अपने आप और अपने स्कूल को। Then he stopped himself. फिर उसने कंट्रोल किया कि नहीं यार नहीं, he resisted himself कि नहीं, कि जो बच्चे अच्छे घर के बच्चे होते हैं, जो इथिकल वैल्यूज जानते होते हैं, वो बड़ों से बात करने से पहले सोचते हैं कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो उसने अपने आप को समझाया, और उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को समझा पाए। नहीं यार नहीं, हेडमास्टर को हेडमास्टर ये मुझे उनके आगे नहीं बोलना चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, या कुछ नेगेटिव नहीं बोलना। Without another word, holding his head high, he stalked out. And not spoken any word. कुछ नहीं बोला। जैसे ही इंस्ट्रक्शन दिया हेडमास्टर ने, holding his head high, just look at the meaning, it means enthusiastically, यानी कि बिल्कुल सिर ऊपर करके। तो he stalked out. Just look at the meaning of stalked out, means walked out. So enthusiastically he just moved out of office of headmaster. I think, dear students, you must have noted down the meaning of stalked out. It means walked out, tempted, keen desire. So I think you are able to understand this very systematic. Moment, point of time. एक किशन जिसको बोलते हैं. Now look at the next. After you shouted the head. Just look at the instruction given by headmaster. The headmaster instructed him to shut the door. क्योंकि जब वो बाहर निकला ऑफिस से, दरवाजा उसने बंद नहीं किया। जो हेडमास्टर के डोर का जो जो हेडमास्टर का डोर था उसको क्लोज नहीं किया। तो इसीलिए आई थिंक एक्साइटेड वे से, एक्साइटेड मतलब एक्साइटमेंट ऑफ नेगेटिविटी, यानी बिहेवियर देख के वो आइंस्टाइन का बिहेवियर को ऑब्जर्व करके द हेडमास्टर वाज इरिटेटेड। तो उन्होंने कहा कि बेटा जैसे तुम बाहर गए, बंद करो इस डोर को, बंद करके जाओ। I think you are able to understand why is there a sign of exclamation here. Albert ignored him. So Albert had not followed the instruction given by the headmaster. Ignore किया, ignorance दिखाया. Was not ever ready to follow the instruction given by the headmaster. तो ये point क्या highlight करता है? Here Einstein was just showing an extreme level of negativity or arrogant attitude, because he was very upset, because he had planned out to quit the school, and so that is why he had arranged medical certificate, but he was not able to show that because uh, I think his planning was quite failure while headmaster announced his words of expulsion of Einstein from the school. I think there is no doubt in that. Ignorance होता है परवाह ना करना, इग्नोर करना। जैसे ही इंस्ट्रक्शन दिया हेडमास्टर ने कि ये डोर को बंद करके जा, क्योंकि तो वो डोर खुला ही छोड़ गया था गुस्से में जब वो ऑफिस से बाहर निकला था। तो एल्बर्ट ने इग्नोर किया उनको। He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years without turning his head to give it a last look. He couldn't think of anyone he wanted to say goodbye to. Just look at very fine paragraph. So he immediately moved out of that particular school where he had spent 5 long years. Miserable word क्यों बेटे यूज किया गया? He was not happy to look at the education level of that particular German school. तो miserable years उनको कहा जाता है जब हम दुखी होते हैं, नेगेटिविटी होती है हमारे साथ। उसके साथ नेगेटिविटी क्या थी? Because he had not liked the education system of German school, because they were forcing for
cramming. I think crystal clear. तो इमीडिएटली स्कूल से बाहर चला गया जैसे ही हेडमास्टर ने इंस्ट्रक्ट किया। यहाँ पर उसने 5 साल बिताए थे, बड़े कष्ट के साल थे उसके, नेगेटिव, because he never wanted to study in that particular school. Without turning his head to give it a last look, तो उसने इतनी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी या इतना भी उसका मन नहीं किया कि मैं स्कूल की तरफ पीछे मुड़ के तो देख लूं एक बार। तो ये सेंटेंस बताता है कि it was willingly wanted to commit that particular just he was just committed to leave that particular school. He wanted to quit that particular school. It was his keen desire to leave that school. I think the previous part of this particular chapter we have studied this particular fact. लेकिन यहाँ वो highlight किया जा रहा है, display किया जा रहा है कि इतना actions speak louder than words. We are able to look at this quotation here. तो एक्शन बड़े अजीब थे उसके जब उसने स्कूल को छोड़ा, तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा उसने स्कूल की तरफ, लास्ट लुक भी नहीं दिया। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। couldn't think of anyone he wanted to say goodbye to. सबसे बड़ा पॉइंट देखिए यहाँ पे, 5 साल से वो स्कूल में पढ़ रहा था, उसको स्कूल में कोई भी टीचर ऐसा नहीं लग रहा था या कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन वहां ऐसा नहीं लग रहा था कि जिनको वो गुड बाय बोले। गुड बाय होता है लास्ट विश, यानी लास्ट जो हम विश करते हैं ना कि जा रहे हैं हम, आखिरी नमस्ते जिसको बोलते हैं। तो उसको मतलब उसको लग ही नहीं रहा था कि किसी से मिलूं आखिरी बार। तो आई थिंक ये पॉइंट ये हाईलाइट करता है कि he was dissatisfied with each and every person of that particular school. Maybe students, maybe teachers, maybe school head, maybe I think you are able to understand this particular point. तो उसको नहीं लग रहा था कि किसी को गुड बाय बोलने की जरूरत है, क्योंकि he was I think extremely irritated in that particular school. Now just look at the next. Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as school. Elsa was back in Berlin and he had no other friends. Just look at this. Indeed, certainly. Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before. तो एक ही पर्सन था म्यूनिक में। निक ऑलरेडी जस्ट एक्सप्लेन इट्स अ सिटी ऑफ जर्मनी, और वो म्यूनिक में एजुकेशन के पर्पस के लिए आया हुआ था। बेसिकली ही वाज फ्रॉम इटली, मिलान। आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी फैक्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर चैप्टर। कोई दोबारा तुम्हें क्रैम करने की जरूरत नहीं है। तो उसको लगा कि एक ही इंसान है यहाँ पे जो कि मेरे साथ मिलने के काबिल है। तो इसलिए जाने से पहले, यानी म्यूनिक छोड़ने से पहले, बिफोर ही लेफ्ट, तो उसको लगा कि यूरी डिजर्व करता है, उसके कजन था यूरी, उनसे मिला। जैसे उन्होंने, यानी कि आइंस्टाइन ने म्यूनिक को जस्ट गुड बाय बोला, बोलने से पहले उनको लग रहा था कि एक ही पर्सन है जो डिजर्व करता है लास्ट नमस्ते यानी गुड बाय, तो उनसे मिले वो। He had come to hate almost as much as the school. देखिए उनको स्कूल का आई थिंक इन्वायरमेंट ऐसा था जिसके कारण उनको म्यूनिक से भी हेट हो चुकी थी, क्योंकि म्यूनिक में उनको आने का पर्पस ही एक था, टू गेट प्रॉपर एजुकेशन। तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। कुछ भी पसंद नहीं था वहां पे, सिर्फ यूरी को मिलना उन्होंने ठीक समझा कि जाते वक्त उनको उस यूरी को यानी अपने कजन को मिलना उसने अपनी सीरियस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, तो उनसे मिला। एल्सा वाज बैक इन बर्लिन। एल्सा तो जा चुकी थी बर्लिन, उसकी कजन थी। एंड लेटर ऑन एल्सा एंड आइंस्टाइन बोथ just
had entered in wedlock. आपने 9th में ये chapter पढ़ा हुआ है. You are able to understand the basics. And he had no other real friends. और तो उसका कोई भी real friend नहीं था वहां पे. सिर्फ एक यूरी, एक था जो कि उसके cousin थे. यानी कि you are able to understand this. तो यूरी से मिला बस last में. ऐसा वहां थी नहीं. I think you are able to understand this particular. Goodbye and good luck, said Yuri when he left. You're going to a wonderful country. I hope you will be happier there. Just look at the words of Yuri, his cousin, Einstein's cousin. So Einstein's cousin Yuri had wished him good luck for his brilliant future. जैसे ही म्यूनिक छोड़ के जा रहा था, वो जैसे ही उन्होंने यानी आइंस्टाइन ने मिलना अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा यूरी से, तो यूरी ने विश किया, क्या विश किया? गुड लक, इतना ब्रिलियंट फ्यूचर हो, और साथ में कुछ ऐड किया. क्या ऐड किया? उन्होंने कहा कि तू बहुत अमेजिंग कंट्री में जा रहा है. अमेजिंग कंट्री किस लिए हाईलाइट किया गया है? जस्ट फॉर इटली. आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बेस उसका इटली का था, पेरेंट्स उसके वही थे, तो नेटिव कंट्री था उसका, वो था इटली. आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर. यूरी ने कुछ और ऐड किया. क्या ऐड किया? कि मुझे 100% श्योरिटी है कि तू वहां जाके खुश रहेगा. बट दिस इज all about line by line explanation of this particular chapter. I think you are crystal clear about each and every point, every meaning, everything. And now you are ever ready to create as many questions as you like. And now look at the last part of this particular lecture. The last part is moral. So, moral क्या होता है बेटे? देखिए हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है इस चैप्टर से. You have to look at. We look at the moral of this particular chapter, that is knowledge is power. कि knowledge जो होती है बहुत बड़ी शक्ति होती है. Look at the pinpoints of the previous lectures. We are able to highlight that particular point, that he was against cramming. He wanted to innovate some extraordinary thing, but he was not able to get proper environment in German school. So I think we're able to get evidence that he was the topmost physicist. He was successfully able to just achieve his goal, even in negative circumstances. Financially, he was not very sound. His father was not with a lot of funds to look at his education. Still,